ओके तो इस रीऑर्डर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੀऑर्डर ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ research method negotiators clarifications impressions. I think it's about impressions, about negotiators, and some research on it. ठीक है जी? Okay, the result showed. The result किहड़ी चीज दा? Hence they आ दो एक तरीके दे conclusion हो सकते ने. This contrasts sharply. एक किहड़ी चीज नु contrast करदा है? I don't know. ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆ introduction ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਆ introduction ਹੈ. Feelings are in themselves not observable, and 𝗖𝗋𝗋's research could not measure them directly. Measure them directly, okay. And the general impression that skilled negotiators seem to convey is they are people who keep their cards close to the chest and do not reveal feelings. Okay, that makes sense. ज़्यादा अपने आप से complete है क्योंकि ना थोड़ा जा incomplete जा लग रहा है second sentence. तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ कि the general impressions that skilled negotiators seem to convey is they are people who keep their cards close to the chest and do not reveal their feelings. Okay. ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ word match ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ. Feelings will go up to feelings as well. So if you take that, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. Feelings are in themselves not observable, and 𝗖𝗋𝗋's research could not measure them directly. ठीक है. ते next की होगा? This contrast, I don't know की contrast हो रहा है. ते the result, I really don't know. इन्होंने कुछ कितना ही नहीं तो फिर result कितना होगा? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ sentence ਲਾਵਾਂਗੇ next. Hence they used a surrogate method. They counted the number of times that the negotiators talked about their feelings or motives. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ repeated word ਹੈ feelings ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ feelings ਹੈ most likely ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ pair ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਓਕੇ this contrasts sharply with the I have no clue. I think it should be this. The results showed that contrary to the general impression, skilled negotiators are more likely to give information about internal events than are average negotiators. Okay, agar aap dhyan na dekho ithe, the negotiators and negotiators are also like the matching words, so most likely it would be a pair. And this contrasts sharply with the amount of information given about external events such as facts, clarifications, and general expressions of opinion. तो अगर तुसी आ चीज़ां ना compare करांगे तो तुहानू ये नजर आवेगा कि जिद्दां आ information जो इत्थे दित्ती गई आ उन्नू contrast कर दिया आ इन्होंने method वखरा इस्तेमाल किया so I think this is how the reorder should flow. Submit करके देख दें की बनदा. Okay जी पूरा सही है. याद रखो कि रीऑर्डर्स के वर्ड मैच कराने बड़े जरूरी है जिन्हें इत्थे देख सकते सी कि फीलिंग्स फिर इत्थे भी इन्होंने फीलिंग्स की गल कीती हुई सी फिर इस दे विच भी नेगोशिएटर्स ने तो दैट काइंड ऑफ मेक सेंस एंड देन दिस इज काइंड ऑफ लाइक the you express your opinion at the end and that kind of looks like a conclusion. So good luck with the reorders. Reorders में औखे नहीं है पर ठंडे दिमाग ना और ध्यान ना करो.